Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, ECO 400 बिजनेस इकनॉमिक्स के लेक्चर नंबर 18 में खुश आमदीद। पहले की तरह हम कुछ टाइम अपने पिछले लेक्चर पे बात करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे कि हमने लेक्चर नंबर 17 में क्या सीखा और उसके बाद आज के लेक्चर को शुरू करेंगे। तो इन द लास्ट लेक्चर वी ट्राई टू लर्न अबाउट द अनएम्प्लॉयमेंट and we said that the natural rate of unemployment is the rate around which the economy fluctuates। और उसके बाद हमने बात की कि how unemployment is measured, and then we said that unemployment before to measure unemployment rate we have discussed different notations that can be used, and then we come up with the formula of measuring unemployment rate, and that was equal to S over S plus F. S is the rate of job separation from the job, and then F is the number of workers who find job। तो इससे आप unemployment निकाल सकते हैं। उसके बाद हमने बात की कि when will be the steady state in the labor market, so that will be the stage when F is equal to 1, and that case the natural rate of unemployment would be equal to 0। And then we have tried to explain different kinds of unemployment। उसमें हमने बात की सबसे पहले frictional unemployment की, and that is due to the time it takes to find job, to match jobs in the market, so people or workers remain unemployed for a certain time period, and because of that reason unemployment होती है और उसको हम frictional unemployment का नाम देते हैं। उसके बाद हमने बात की it can be increased by unemployment insurance। तो unemployment insurance की वजह से frictional unemployment बढ़ सकती है। उसके बाद हमने स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की बात की, एंड वी सेड दैट स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज ऑफ द वेज rigidity। wages are rigid downward, they are sticky above than the equilibrium wage, एंड उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रहती है इकोनॉमी में और उसको हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का नाम देते हैं। उसके बाद हमने ये भी देखा कि why wages are rigid, why wages are stick at some point, right? And that we have said that there are three reasons, तीन वजूहात हैं जिसकी वजह से wages are rigid downward। हमने ये कहा, number one, it is because of the minimum wage laws and the wage which is fixed by the government, that this you cannot charge wage below than this wage rate, pay wage rate to the workers below this rate, right? So which is all most of the time above than the equilibrium wage, तो उसकी वजह से wages are rigid downward। दूसरी जो reason हमने wage rigidity की डिस्कस की, so that was the labor unions। most of the organizations, whether it is private or public, worker unions are there, labor unions are there to protect the rights of the workers, right? So the most of the time they are, since they are from inside the organizations, so they demand high wages as compared to the equilibrium wage rate, और wages ज़्यादा रहती हैं। उसके बाद हमने तीसरी वेज जो बात की, रीज़न की बात की wage rigidity की, that was the efficiency wage। most of the time some of the organization would like to pay more wages to their workers, to their laborers, because they want to increase their efficiency and to increase their productivity and profit margin। So because of these three reasons, wage rigidity, labor unions and efficiency wages, the wages are rigid downward, and because of this the people or the workers remain unemployed for a certain time period, and that is known as the structural unemployment। Then we have talked about the duration of unemployment. Most spells are short-term spells. Unemployment is for the brief time period, but most weeks of unemployment are attributable to a small number of long-term unemployed person। लेकिन
जब हम बात करते हैं कि ज़्यादा लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द वीक्स अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो वो थोड़े से लोग होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयड रहते हैं. Most of the people remain unemployed for a short term, but there are very few workers who remain unemployed for long term. So this is what all about we have learned in the previous class. Now what we are going to talk about in today's lecture, आज हम बात करेंगे unemployment जो कि हमने पिछले लेक्चर में बात की, उसको रिलेट करेंगे इन्फ्लेशन के साथ. How these two concepts are related, किस तरह से हम अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन को एक दूसरे के साथ लिंक अप कर सकते हैं, तो इस पे आज के लेक्चर में हम बात करेंगे. सबसे पहले जो इसमें हम देखेंगे व्हाट सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, और उसके बाद बात करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ फिलिप्स कर्व, द कर्व विच इज गिवन बाय द फिलिप्स. In this curve, with the help of this curve, would like or try to explain the relationship between unemployment and inflation. And lastly हम बात करेंगे the cost of reducing inflation. So what cost an economy or society has to pay if we try to reduce the level of inflation in the economy. So this is the sequence of the today's lecture. इन तीन चीज़ों पे आज हम बात करेंगे, यानी कि सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन पे बात करेंगे, उनके रिलेशनशिप पे बात करेंगे, और उसके बाद इस रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने के लिए we'll try to get help of Phillips curve, and then finally we'll try to see the cost of reducing inflation in the economy. As we know that we have learned in the previous lecture that the natural rate of unemployment depends on various features of the labor market. तो बहुत सारी खसूसियात पे, लेबर मार्केट की बहुत सारी खसूसियात पे जो नेचुरल रेट है उस पे डिपेंड करता है. फॉर एग्जांपल, एज वी लर्न इन द प्रीवियस लेक्चर, द नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिपेंड्स ऑन द मिनिमम वेज लॉज कॉन्सेप्ट, द मार्केट पावर ऑफ यूनियंस, the role of efficiency wages, and the effectiveness of job search. All these are the factors that can become a reason or cause of the unemployment rate. और किसी इकानमी में जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो इन चीज़ों पे डिपेंड करता है जिनकी हमने अभी बात की. दैट इज़ द मिनिमम वेज लॉज, द मार्केट पावर ऑफ लेबर यूनियंस, देन द एफिशिएंसी वेजेस, एज वेल एज द इफेक्टिवनेस ऑफ जॉब सर्च. And now we'll talk about the inflation. Inflation rate depends primarily on the growth rate in the quantity of money in the economy, and as we know that most of the countries in जो growth rate है inflation पे वो depend करता है on the growth rate of money, and this is controlled by the federal bank of any country. So in different countries federal bank has different names. Like in case of Pakistan, the name of Fed or the federal bank is the State Bank of Pakistan. Now State Bank of Pakistan is controlling or regulating the money supply in the economy, and Milton Friedman developed quantity theory of money. He said that money supply is the main cause of inflation. So we can say that the growth or the inflation rate depends most of the time on the growth rate of money supply in the economy. Now society face trade-off between these two concepts. Just we said that unemployment and inflation, so they face trade-off between unemployment and inflation. Now if policy makers expand aggregate demand, अगर policy maker जो हैं at the national level, if they want to expand aggregate demand in the economy, so they can lower unemployment rate, but only at the cost of high inflation rate, right? So high inflation, right? So if the government or the policy makers want to reduce the level of unemployment and they want to use the concept of aggregate demand, if they increase the aggregate demand in the economy, so this will lead to higher inflation in the economy. Now if they contract aggregate demand को कम करते हैं, they can lower inflation, but at the cost of
इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट, राइट। तो हमने देखा कि ट्रेड ऑफ क्या एग्जिस्ट करता है बिटवीन दीज टू पैरामीटर्स विच इज अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। अगर गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर ये चाहते हैं कि एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा के they can reduce unemployment, they can lower unemployment level in the economy, but this could be done at the cost of higher inflation, because as we know that जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है, as we have learned in the previous lecture, तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है, राइट। तो डिमांड के बढ़ने से आउटपुट भी बढ़ती है, लेकिन एट द सेम टाइम प्राइस लेवल बढ़ जाता है। जब आउटपुट बढ़ती है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है। तो दो फैक्टर्स काम कर जाते हैं साइड बाय साइड। विद द इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड we can lower the unemployment rate in the economy, but at the same time at the cost of high inflation. And if the policymaker contract the aggregate demand so to reduce the inflation rate in the economy, they can do this, but only at the cost of higher unemployment or more unemployment in the economy. So trade-off exists between inflation and unemployment. So we can say that, we can conclude that there is a trade-off which exists between these two concepts, between these two parameters, between inflation and unemployment. अगर हम किसी एक को कम करते हैं तो दूसरे से ज़्यादा हो जाता है, दूसरे को कम करते हैं तो पहले वाला ज़्यादा हो जाता है. So the situation exists, this trade-off exists between these two parameters, between inflation and unemployment. We'll try to explain this trade-off or this relationship between unemployment and inflation with the help of, as we said, with the help of Phillips curve. Phillips basically was an economist, and he gave this curve. He said that inflation and unemployment rate are negatively correlated with each other, are inversely related with each other. अगर आप inflation में इजाफा होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, अगर इन्फ्लेशन कम होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है. अगर आप इस डायग्राम में देखें तो वी हैव ए कर्व विच इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग विच इज़ नोन एज द फिलिप्स कर्व, जो कि ये जाहिर कर रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट में और इन्फ्लेशन में इनवर्स रिलेशनशिप है, उल्टा रिलेशनशिप है. इनमें से किसी एक में अगर इजाफा होता है तो दूसरे में कमी वाक़ई होती है, और vice versa. Look at point A. We have 2% inflation in the economy and 7% unemployment rate in the economy. Now suppose if inflation goes up from 2 to 6% in the economy, naturally unemployment will go down from 7 to 4% in the economy. Like, how we can explain this trade-off? Because you know, when prices goes up, there is incentive for the producer to produce more, right, to supply more in the economy. When they produce more, when they supply more, with the increase in prices, naturally what will happen, they employ more labor in the economy, तो unemployed workers को भी नौकरी मिल जाती है. So the increase in prices lead to decrease in unemployment in the economy. So because of this phenomena, this relationship, we have negatively sloped Phillips curve, which explain the trade-off between inflation and unemployment in the economy. Now we'll try to relate the aggregate supply, aggregate demand and aggregate supply concept with the Phillips curve. Now Phillips curve shows the short-run combination of unemployment and inflation that arises as the shift in aggregate demand curve move the economy along the short run aggregate supply curve. So what we can say that ये जो Phillips curve है, this explain the combination of unemployment and inflation rate that arises because of the shift in the aggregate demand and aggregate supply in the short run. Now the greater the aggregate demand for goods and services, the greater is the output level in the economy and the higher is overall price level in the country. Now a higher level of output results in lower level of unemployment. तो अगर
जब आप रिलेट करते हैं एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट सप्लाई के कॉन्सेप्ट को विद दी फिलिप्स कर्व, तो वेन एवर देयर इज इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी, जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो उसका इफेक्ट क्या होता है, आउटपुट जो है इकोनॉमी में बढ़ जाती है। जब आउटपुट इकोनॉमी में बढ़ती है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ती है, तो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल जो है कम होता है और प्राइस लेवल बढ़ जाता है। So we can explain this sort of relationship between Phillips curve and aggregate demand with the help of diagrams given in the next slide. If you look in this slide, we have two diagrams. On left side we have the aggregate demand and aggregate supply in the market, in the product market. On the right side we have a Phillips curve. Now we have the downward sloping aggregate demand curve, as we know that there is an inverse relationship between price level and quantity of output always. Prices बढ़ती हैं, output कम होती है, prices कम होती हैं, तो output की demand बढ़ जाती है. So we have an aggregate demand curve which is low aggregate demand curve, and then we have original short run aggregate supply curve. Both these two curves अगर आप देखें एक दूसरे को intersect कर रहे हैं at point A. Now this is the equilibrium in the product market. Now this determines the equilibrium price which is 102, और इस प्राइस पे जो डिमांड है आउटपुट की that is 7500. Now suppose अगर corresponding to this point we have a point A on the Phillips curve where the price inflation is 2 and unemployment is 7. Now suppose if the policymaker or the government increase the aggregate demand in the economy, if there is a high demand of the output, so the demand curve will shift rightward. Now with this shift, now this new demand curve, aggregate demand curve, is intersecting economy aggregate supply curve at point B. Now what is happening at point B? अगर आप देखें तो prices बढ़ गई हैं from 102 to 106. प्राइस के बढ़ने के साथ क्वांटिटी डिमांड जो है और वो भी बढ़ गई है, which is from 7500 to 8000. Now we can see a corresponding to this point, जब prices बढ़ गई due to increase in aggregate demand, तो we can reflect this point in the right side diagram. So point B is the point where we have a higher price from 2 to 6 dollar, right? So with at this price the unemployment in the economy is 7%. So we have seen that we can conclude that with the increase in aggregate demand, by increasing aggregate demand in the economy, this lower the unemployment rate by raising the price of the product and quantity demand and supply of the product in the market, right? So जब कभी आप aggregate demand को बढ़ाते हैं और तो फिलिप्स कर्व के ज़रिए हम अगर इसको रिलेट करें अनएम्प्लॉयमेंट को और इन्फ्लेशन को, तो हमने ये देखा कि एग्रीगेट के डिमांड के बढ़ने से प्राइसेस बढ़ती हैं, प्राइसेस के बढ़ने से आउटपुट डिमांड बढ़ती है, और फिलिप्स कर्व पे एक हम जो मूव कर जाते हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, विच टेल्स अस दैट विद द इंक्रीज इन द प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी एंड द अनएम्प्लॉयमेंट विल गो डाउन. Now we'll talk about the shifts in the Phillips curve. We'll continue with the Phillips curve and here talk about the role of expectations, because expectations of producers and consumers can play important role in the shift of the Phillips curve. Now the Phillips curve seems to offer a policymaker a menu of possible inflation and unemployment outcomes. तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज अगर आप इन्फ्लेशन को देखें, इफ यू लुक एट द फिलिप्स कर्व, तो ये हमें डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफर करता है, डिफरेंट पॉइंट्स देता है, डिफरेंट कम्बिनेशन बताता है, और हर एक कम्बिनेशन पे वी हैव ए डिफरेंट प्राइसेस, डिफरेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट, राइट? सो वी कैन से दैट
ये जो फिलिप्स कर्व है ये पॉलिसी मेकर को डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफर करता है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफर करता है अबाउट द इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट. नाउ what will happen to the Phillips curve in the long run? अभी तक हमने जो बात की हमने कहा कि there is trade off between inflation and unemployment rate in the short run, and we have seen that the relationship between these two is downward negatively slope inverse, और जिसको हमने एक downward और inverse sloping curve के जरिए explain किया. Now in 1960s Friedman and Phillips concluded that inflation and unemployment are unrelated in the long run. So as a result, long run Phillips curve is vertical at the natural rate of unemployment rate. तो फ्रीडमैन ने और फिलिप्स ने इन 1960s में ये कंक्लूड किया कि लॉन्ग रन में इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का आपस में रिलेशनशिप नहीं होता, नहीं रहता, एक दूसरे के साथ मुंसलिक नहीं रहते, और the shape of Phillips curve in long run is vertical at the natural rate of unemployment rate. So monetary policy in this case could be an effective, so we can say that monetary policy could be effective only in the short run but not in the long run. Why? Because with the change in monetary policy by expansionary or contractionary policy, we can change the aggregate demand in the economy only in the short run, but it can become effective in the long run when we say that inflation or unemployment का relationship almost खत्म हो जाता है और we have a vertical Phillips curve, हमें एक straight Phillips curve मिलता है. Now the shape of इस अगर slide में देखें तो we have tried to show you the shape of Phillips curve in the long run. As we said that, जैसा कि हमने कहा फ्रीडमैन ने और फिलिप्स ने कंक्लूड किया कि लॉन्ग रन में ये दोनों जो पैरामीटर्स हैं इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के एक दूसरे के साथ इनका रिलेशन ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है. दे आर अनरिलेटेड इन द लॉन्ग रन. सो वी हैव ए वर्टिकल Phillips curve at a natural rate of unemployment rate. So if you look at this diagram, when the Fed or the government increases money supply, the growth rate of money supply, the rate of inflation will increase. Inflation तो बढ़ जाएगा और इस कर्व में हम कहाँ से मूव करके point A to B with high inflation rate, but we can see that the unemployment remains its natural rate in the long run. तो हमने ये देखा कि long run में जब we have vertical Phillips curve, so whatever is the policy of the government to increase or decrease the money supply in the economy, to increase the aggregate demand or reduce the aggregate demand in the economy, there will be high prices and low prices, but unemployment will remain same at its natural level. Now we'll continue and try to explain this relationship further. We have two, पहले हमने एक जो इससे पिछले डायग्राम में हमने शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व पे इफेक्ट देखा था एग्रीगेट डिमांड का और गवर्नमेंट की पॉलिसी का. अभी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं एक ही स्लाइड पे कि हाउ द इफेक्ट और चेंज इन एग्रीगेट डिमांड कैन इफेक्ट द प्राइसेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन द लॉन्ग रन विद द हेल्प ऑफ फिलिप्स कर्व. तो इस डायग्राम में अगर देखें राइट साइड पे वी हैव द रिलेशनशिप, वी हैव द सप्लाई कर्व इन द लॉन्ग रन. जैसा कि हमें मालूम है इन द लॉन्ग रन वी हैव ए वर्टिकल सप्लाई कर्व एंड वी हैव ए डाउनवर्ड डिमांड कर्व AD1. So both these two curves intersect each other at a point A. At this point we have the price level in the economy which is P1 and then natural rate of output produced in the economy. Corresponding to this point, we have a point A in the right side diagram. This tells us a certain inflation rate. Suppose we can say that
we can give a number, maybe 5, inflation rate as 5, a certain natural rate of unemployment. Now suppose an increase in the money supply, जब गवर्नमेंट मनी सप्लाई बढ़ाती है इकोनॉमी में तो क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, एंड द कर्व शिफ्ट टू द राइट वर्ड. सो रेड लाइन के साथ जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है, दिस इज न्यू डिमांड कर्व, and this shifted rightward due to increase in the money supply by the policymaker or by the Federal Bank or the State Bank of Pakistan. Now this new supply curve intersect the existing long term supply curve at point B. अब equilibrium जो है वो कहाँ पे है, point B पे, with a high price level, right? तो money supply के बढ़ने से क्या हुआ, prices बढ़ गई, but natural rate of output remains same because we have vertical long run supply curve. Now corresponding to this point we have a point B in the right side diagram, which is on the long run Phillips curve, and we can say that with the increase in money supply, जब aggregate demand बढ़ी तो prices बढ़ गई, prices के बढ़ने से unemployment और output remain constant or it remain its natural level in the long run. So what we can conclude that हमने देखा previous slides में कि short run में जब aggregate demand बढ़ती है तो prices बढ़ती हैं और prices के बढ़ने से unemployment कम हो जाती है, लेकिन long run में हमने ये देखा, so whatever is the policy of the government regarding money supply, aggregate demand को तो वो इफेक्ट करेगी और aggregate demand के साथ prices को इफेक्ट करेगी, prices बढ़ जाएंगी, but natural rate of output remains same in the long run, as well as natural rate of unemployment will also remain same at its constant level in the long run. Now expectations about and the short run Phillips curve will continue to explain this phenomena. Now expected inflation measures how much people expect the overprice level to change. Now when we talk about expectation, when we relate inflation with the expectation of the people, we know that it totally depends on how people expect, how much people expect that about the overall level of prices in the economy. In the long run, expected inflation is equal to the actual inflation, but in the short run, the Fed ability to create unexpected inflation exists only in the short run. So only people anticipate inflation or expect inflation. The only way to get unemployment below the natural rate is for actual rate to the above anticipated rate. तो हम बेसिकली हम कर ये रहे हैं इस डायग्राम में, हम एक्सपेक्टेशन का रोल देख रहे हैं कि हाउ एक्सपेक्टेशन कैन प्ले ए रोल एंड कैन एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट. अगर लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि देयर विल बी सम चेंज इन द प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी, तो ऑफ कोर्स दिस विल इफेक्ट द एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द इकोनॉमी, बट नॉर्मली in the long run actual and expected inflation adjust each other and become same. So we can say that people can anticipate inflation, expect inflation only in the short run, and only in that case and they can bring the unemployment below the natural rate if the anticipated inflation is greater than above the actual inflation rate is above than the anticipated inflation. So we can explain this relationship with the help of this formula. अगर आप देखें, unemployment rate is equal to natural rate of unemployment minus A is any constant number within bracket actual inflation minus expected inflation. तो इस फार्मूले में we can say that government can only or the policy maker can only bring actual rate below than the natural rate only if actual rate is above than the anticipated rate. अगर anticipated rate ज़्यादा हो जाएगा actual rate से, so then it is difficult to bring actual rate of unemployment below than the natural rate. So if the policy maker or the government want to reduce unemployment below than the natural rate, so actual inflation should be greater than the expected inflation. So this equation basically relates
the unemployment rate to the natural rate of unemployment, actual inflation and expected inflation. अगर आपके पास फिगर्स हैं एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट की, एक्सपेक्टेड की और नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की, तो यू कैन फाइंड द एक्चुअल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी and you can compare the actual rate with the natural rate, and it depends on, याद रखिए कि एक्चुअल रेट उस वक्त कम होगा नेचुरल रेट से जब आपका एक्चुअल इन्फ्लेशन एंटिसिपेटेड से ज़्यादा होगा. या अगर एक्चुअल इन्फ्लेशन एंटिसिपेटेड से कम होगा तो नेचुरल रेट, एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो नेचुरल से कम नहीं होगा, उससे ज़्यादा हो जाएगा. Now we'll try to explain this expected inflation shifts in the short-run Phillips curve with the help of this diagram. If you look in this diagram, we have on y-axis we are measuring inflation rate, on x-axis we are measuring unemployment rate. We have the short-run Phillips curve and the long-run Phillips curve. Now we have a short-run Phillips curve with low expected inflation, which is with blue line, ठीक है, and we have the long-run Phillips curve with a green line. Both of these two curves are intersecting at a point A. Now suppose if the government adopt expansionary policy, move the economy up along the short-run Phillips curve, so what will happen? अगर जब गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करती है तो इकोनॉमी मूव करती है, ये जो शॉर्ट रन ब्लू लाइन में जो आपको नजर आ रहा है, इकोनॉमी इज मूविंग टूवर्ड्स पॉइंट बी, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी ऑन दिस शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व with the expansionary policy move, right? So what is happening at point B? That economy reaches at high inflation rate, right, as compared to point B, and low unemployment rate. But in the long run, expected inflation rises and the short run Phillips curve shift to the right, and this intersect to the long run Phillips curve at point C, right? So we again, the economy again come back to its natural rate of unemployment rate. So I will try to repeat again this diagram. We have two curves in this diagram, short run Phillips curve and long run Phillips curve. Both curves intersect each other at point A. This gives us certain level of inflation in the economy and natural rate of unemployment prevailing in the economy. Now with the expansionary policy move, the economy is moving from point A to B along the short run Phillips curve. As we said that जो गवर्नमेंट की मॉनेटरी पॉलिसी है, whether it is expansionary or contractionary, that can affect only in the short run, right? तो short run के साथ Phillips curve पे इकोनॉमी मूव करती है from point A to B. उसका रिजल्ट क्या होता है एक्सपेंशनरी पॉलिसी मूव का, कि इकोनॉमी moves at a higher inflation rate and lower unemployment rate. Now, but what will happen in the long run? Expected inflation rises and short run Phillips curve shift to the right, and this intersect the long run Phillips curve at point C. Or we can see that in the long run expected inflation जब बढ़ता है तो इकोनॉमी क्या होती है, वापस मूव कर जाती है अपने नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे, right? So this is how the expectations can play a very important role in explaining the relationship between inflation and unemployment with the help of short run Phillips curve and long run Phillips curve. The natural rate of the natural experiment of the natural rate hypothesis. Now what is natural rate hypothesis about the natural rate of unemployment? So the view that unemployment actually returns to its natural rate, जैसा कि अभी हमने एक पिछले डायग्राम में देखा कि in the long run the unemployment, the actual unemployment which is below than the natural rate is the short run phenomena,
in the long run the unemployment eventually returned to its natural rate regardless of the rate of inflation, and this is called natural rate hypothesis. So whatever is the inflation rate, economy moves towards its natural moves at its natural rate of unemployment, whatever will be the inflation rate. So this sort of phenomena is known as the natural rate hypothesis. Now historical observation supports this hypothesis कि short run में हम कह सकते हैं कि due to the expansionary policy or the policy move of the government, there is a trade-off between unemployment and inflation, and if there is increase in inflation in the short run by increasing the aggregate demand and money supply, so it can reduce unemployment, but in the long run, whatever is the inflation rate, the economy move or returns to its natural rate of unemployment, and this is known as the natural rate hypothesis. The concept of stable Phillips curve broke down in 1970s, right? In early 70s. So in early 70s जो concept था Phillips curve का, stable Phillips curve का, कि हमने दो तरह की Phillips curve की अभी बात की है, short run की which is downward sloping, negatively sloped curve, और हमने long run Phillips curve की भी बात की which is vertical. So this concept was broken in early 70s, and during 70s and 80s the economy experienced high inflation and high unemployment at the same time. तो अगर हम 70s 80s की बात करते हैं तो उस वक्त दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे थे. High inflation rate was accompanied by high unemployment rate in the economy. तो ये जो concept था Phillips curve का, stable Phillips curve का, तो early 70s में broke हो गया था, और late 70s and 80s में both of the parameters were moving in the same direction, right? And that was that there was a high unemployment and high inflation in the economy. So if you look in this diagram, अगर आपको नजर आएगा कि there are some points जहाँ पे there is high unemployment and high inflation rate in the economy. Like if we talk about 71, 72 and 73, specifically these years, so we can say that there is high unemployment, high inflation rate. So both parameters are low unemployment, low inflation rate. So both are moving in the same direction, not in opposite direction. So we can say that the concept of stable Phillips curve was broken in the early 70s, और उसके बाद 70s और 80s में both of these two parameters were moving in the same direction, either higher side or lower side. Now, so far we have talked about the shocks or the change in aggregate demand, and we have seen that how the change in aggregate demand due to change in the policy of the government, expansionary monetary policy, can affect the inflation in the economy, and how this affect the unemployment in the economy, right? Now we'll try to see how the shifts in the Phillips curve and try to see the role of supply shocks, how supply or aggregate supply can play its role to change or shift the Phillips curve in the economy, and how the supply shock affect the inflation and unemployment in the economy. तो अभी तक हमने जो बात की है, हमने ये देखा है कि किस तरह गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी, growth in money supply can affect the aggregate demand, and how aggregate demand can affect the inflation and unemployment in the economy. Now we'll see that how the supply shocks can shift the Phillips curve and affect the inflation and unemployment in the economy. Historical events have shown that the short-run Phillips curve can shift due to the change in expectation. So this is what we have learned, that, and history or economics tells us that short-run Phillips curve can be shifted, can be changed, and that because of the expectations, change in the expectation. The short-run Phillips curve also shifts because of shocks in the aggregate supply. Aggregate supply की वजह से भी
जो फिलिप्स कर्व है शॉर्ट रन में शिफ्ट हो सकता है। मेजर एडवर्स चेंजेस इन एग्रीगेट सप्लाई कैन वर्सन द शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। बहुत ज्यादा अगर एडवर्स शॉक्स आए सप्लाई में, यानी कि सप्लाई कम हो, तो दिस कैन इवन मेक वर्स, मोर वर्स द ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अगर हम ये कहते हैं कि सप्लाई बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो ये जो चीज़ है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट रिलेशन को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकती है। एंड एडवर्स सप्लाई शॉक गिव ए पॉलिसी मेकर लेस फेवरेबल ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। जो एडवर्स सप्लाई शॉक है तो हम कह सकते हैं कि लेस फेवरेबल है फॉर द पॉलिसी मेकर बिकॉज इट कैन affect it can disturb the relationship between inflation and unemployment in the economy. Now a supply shock is an event that directly alters the firm cost, right? So जब भी हम सप्लाई की बात करते हैं तो फर्म्स की बात होती है, और सप्लाई में जब चेंजेस आती हैं तो ऑफ कोर्स दिस चेंज कैन इफेक्ट the cost of the firm, and as a result जब cost effect होती है तो this will bring a change in the price of the product. तो हम क्या देखा, what we have learned, हमने क्या observe किया कि whenever we talk about supply, either adverse shock or positive shock in supply, this change in supply affect the cost of the firm, right? तो जब कास्ट इफेक्ट होती है तो नेचुरली प्राइस भी इफेक्ट होगी. सो दिस शिफ्ट इन द इकोनॉमी एग्रीगेट, सो दिस विल ब्रिंग ए शिफ्ट इन द एग्रीगेट सप्लाई कर्व ऑफ द इकोनॉमी, एंड एज ए रिजल्ट जब एग्रीगेट सप्लाई कर्व शिफ्ट होता है, एज ए रिजल्ट फिलिप्स कर्व में भी शिफ्ट आती है शॉर्ट रन में. तो अभी हमने जो बात की, हमने ये कहा कि ये जो सप्लाई शॉक है, जो एडवर्स सप्लाई शॉक है, दैट कैन बी इवन वर्स or less favorable for the policy maker because it can even make worse situation and in the economy that explain the relationship between inflation and unemployment, right? So whenever we talk about a supply shock or the change in supply, we immediately think of the cost, change in the cost of the firm. तो जब cost of the firm में तब्दीली आती है तो naturally this change will bring a change in the price of the product, right? So this can shift the supply curve, and this shift in supply curve can shift the short run or the Phillips curve in the economy. So we'll see that in this slide how the shift in supply curve can shift the short run Phillips curve. And specifically we are talking about here the adverse aggregate supply shock. Adverse means we are decreasing the supply and shifting the supply curve inside our leftward. If you see in the left side diagram, we have this aggregate demand curve with the blue line. We have a original aggregate supply curve AS1 with the blue line. Both these two curves intersect each other at point A. The price level in the economy is P1, and we have Y1 output level produced in the economy. Corresponding to this, we have a blue line Phillips curve PC1 in the right side diagram, और एक point के correspondence we have a point A on that particular curve. Now we'll see what will happen in both of these diagrams if we have an adverse supply shock in the economy. So with the adverse supply shock in the economy, the supply curve will shift leftward, right, from AS1 to AS2. So what will happen, what is happening with this shift in our adverse shock in supply? Now economy is at equilibrium at point B. Now with this adverse supply shock or reduction in supply, prices has increased, general price level has increased from P1 to P2. और जब प्राइस बढ़ी तो व्हाट विल हैपन टू द आउटपुट इन द इकोनॉमी? आउटपुट नेचुरली कम हो जाएगी, बिकॉज प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होगी, और जब डिमांड कम होगी तो प्रोडक्शन लोग कम करेंगे, सप्लायर्स और द फर्म रिड्यूस देयर प्रोडक्शन, और आउटपुट लेवल इकोनॉमी में कम हो जाएगी. नाउ कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व, there will be a shift in the Phillips curve from PC1 to PC2, and now
we move from point A to B. Now what is happening at point B in this curve, right? So it's giving policymaker a less favorable trade-off between inflation and unemployment. Why this is a less favorable trade-off for the policymaker between inflation and unemployment? Because अगर आप देखें तो इस पॉइंट बी पे इन्फ्लेशन भी है, देयर इज इंक्रीज इन प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी, और अनएम्प्लॉयमेंट भी है, राइट? तो हमने ये कहा इफ देयर इज एन इनवर्स सप्लाई शॉक इन द इकोनॉमी, अगर सप्लाई कम होती है इकोनॉमी में तो उसका क्या इफेक्ट होगा लेबर मार्केट में? प्राइसेस बढ़ जाएंगी और आउटपुट कम हो जाएगी। और जब हमने फिलिप्स कर्व में बात की, शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व की बात की, तो सिंपली फिलिप्स कर्व विल शिफ्ट राइटवर्ड or we'll move from point A to B, and this point B is less favorable point for the policymaker, because at this point both of the parameters have increased. That is, there is increase in the inflation rate in the economy, there is increase in the unemployment rate. So the reverse supply shock gave us a trade-off between inflation and unemployment, which is less favorable for the policymaker. तो दिस इज हाउ वी कैन सी दैट जब हमने डिमांड की बात की तो डिमांड की शिफ्ट की तो उसमें दैट वाज फेवरेबल पॉइंट फॉर द पॉलिसी मेकर, क्योंकि इन्फ्लेशन के बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई थी। यहाँ पे जब हमने एडवर्स सप्लाई शॉक की बात की, उसको रिलेट किया फिलिप्स कर्व के साथ, रिलेट किया विद द ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, तो हमने ये देखा दिस एडवर्स सप्लाई शॉक इन द इकोनॉमी is a less favorable for the policy maker, because it gave us less favorable trade-off between inflation and unemployment, because both rises with adverse supply shock in the economy. Now the cost of reducing inflation. Now if the government want to reduce inflation, what the cost they has to pay? To reduce inflation, the Fed has to pursue contractionary monetary policy. तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? इन्फ्लेशन कम करने के लिए मनी सप्लाई कम करनी पड़ेगी, बिकॉज जैसा कि मैंने शुरू में बताया आपको कि मिल्टन फ्रीडमैन ने ये कहा था कि क्वांटिटी ऑफ मनी जो है, मनी सप्लाई जो है किसी मुल्क में इन्फ्लेशन को डिटरमिन करती है। अगर मनी सप्लाई बढ़ जाती है, गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी पॉलिसी यूज़ करती है, मॉनेटरी पॉलिसी, तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हम जब गवर्नमेंट इफ दे रिड्यूस करना चाहती है कॉस्ट इन्फ्लेशन को, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? दे हैव टू अडॉप्ट कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। व्हेन द गवर्नमेंट स्लोस द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ मनी, व्हाट विल हैपन? क्या होगा जब मनी सप्लाई कम करेगी गवर्नमेंट, उसके ग्रोथ रेट को कम करेगी, तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। व्हेन एग्रीगेट डिमांड जब कम होगी तो दिस रिड्यूसेस द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, राइट? जब गुड्स एंड सर्विसेज कम प्रोड्यूस होंगी तो नेचुरली अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगी? अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगी, ठीक है ना? सो हमने ये कहा कि कास्ट क्या गवर्नमेंट को बर्दाश्त करनी पड़ी है रिड्यूस करने के लिए इन्फ्लेशन की, कि अगर गवर्नमेंट चाहती है कि इन्फ्लेशन को कम करे, कंट्रोल करे, तो उसको कंट्रोल करने के लिए उसे कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करनी है? कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। जब गवर्नमेंट कंट्रैक्शनरी यानी कि मनी सप्लाई को कम करती है, मनी सप्लाई की ग्रोथ रेट को इकोनॉमी कम करती है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, टू रिड्यूस इन्फ्लेशन, तो उसका इफेक्ट क्या होगा? जब मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम होती है तो एग्रीगेट डिमांड ओवरऑल इकोनॉमी में कम हो जाती है, लोगों के पास परचेजिंग पावर कम हो जाती है। जब एग्रीगेट डिमांड कम होती है तो उसका इफेक्ट क्या होगा? जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो इकोनॉमी में कम हो जाएंगी। जब गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन कम होगी, प्रोडक्शन इकोनॉमी कम होगी, सप्लाई कम होगी, this will rise or raise the unemployment level in the economy. So the cost of reducing inflation in the economy by adopting contractionary monetary policy, government basically promote or rise or raise the unemployment level in the economy. So this is the cost of reducing inflation. अगर गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कम करना चाहेगी तो उसको जो कॉस्ट बर्दाश्त करना पड़ती है, that is rise in unemployment. नाउ कास्ट, इसी चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम,
where the government is using disinflationary monetary policy in the short and the long run, and we'll see that. So what will happen to inflation and unemployment in the economy? So we have short-run trade-off, a short-run Phillips curve with high expected inflation. With the blue line we have the long-run Phillips curve, and which is vertical line, and we have now if the government adopt, so we have a point A where prices are very high, right? So we have a price is very high, there is inflation in the economy at point A, and we have a natural rate of unemployment in the economy. Now suppose if the government want to control this inflation by adopting contractionary monetary policy, or want to slow the growth rate of money supply in the economy, तो क्या होगा? Economy will move along this short-run Phillips curve from point A to point B. When we come to point B पे क्या हो रहा है? We have a lower inflation rate in the economy but higher unemployment in the economy. So what will happen, right? So long run में क्या होगा? Long run में ये होगा, expected inflation falls, expected inflation जो है वो कम हो जाएगा, और short run Phillips curve shift to the left, and we move to point C, which is lower inflation, and the economy reaches at its natural rate of unemployment rate, right? So जब हमने रिलेट किया शॉर्ट रन को और लॉन्ग रन को, शॉर्ट रन में हमने क्या देखा था पिछले डायग्राम में, कि शॉर्ट रन में जब गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी पॉलिसी और द कंट्रैक्शनरी पॉलिसी अडॉप्ट करती है तो उससे हमें क्या रिजल्ट निकलता है कि इन्फ्लेशन के साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाती है. लेकिन द कास्ट ऑफ रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन द गवर्नमेंट बाय अडॉप्टिंग ए पॉलिसी, हमने यहाँ पे भी ये देख रहे हैं कि जब गवर्नमेंट कंट्रैक्शनरी पॉलिसी अडॉप्ट करती है तो उससे एग्रीगेट डिमांड कम होती है, एग्रीगेट डिमांड कम होती है, प्राइसेस कम होती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है. अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो अनएम्प्लॉयमेंट जब बढ़ेगी तो क्या होगा? ऑफ कोर्स देयर विल बी लेस प्रोडक्शन, राइट? सो कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी से एग्रीगेट डिमांड कम हुई, एग्रीगेट डिमांड के कम होने से क्या हुआ? जो प्राइसेस हैं कम हुई, प्राइसेस कम होने से देयर इज लेस इंसेंटिव फॉर द प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस मोर, सप्लाई कम होगी, प्रोडक्शन कम होगी, जब प्रोडक्शन कम होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, राइट? सो वी मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, बट in the long run what will happen? The expected inflation falls and short run Phillips curve shift from this blue line from towards left, and the economy moves from point B to C at a lower inflation rate and the natural rate of unemployment. तो हमने क्या देखा इस डायग्राम में? The cost of reducing inflation with the help of contractionary policy brings an economy at a point with the lower inflation rate but with high unemployment rate. But in the long run, expectations start, expected inflation falls, and then the economy moves toward its natural rate of unemployment rate. Now, to cost of inflation, to reduce the cost of inflation, an economy must endure a period of high unemployment and low output. तो हमने what we have concluded, हमें क्या नतीजा अखज़ किया कि to reduce inflation in the economy, an economy must endure with the high inflation, high unemployment and low level of output. So when Fed combat inflation, the economy moves down the short-run Phillips curve, and the economy experiences lower inflation but the cost of higher unemployment. So we can क्या हम नतीजा अखज़ कर सकते हैं? We can conclude that अगर गवर्नमेंट रिड्यूस करना चाहती है इन्फ्लेशन को विद द हेल्प ऑफ कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है? कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी से एग्रीगेट डिमांड कम होती है, एग्रीगेट डिमांड जब कम होगी तो प्राइसेस कम होती हैं चीज़ों की, जब प्राइसेस कम होती है प्रोडक्शन कम होगी, सप्लाई कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी. सो गवर्नमेंट कैन रिड्यूस इन्फ्लेशन एट द कॉस्ट ऑफ higher unemployment rate in the economy.
So this is all about today's lecture. So what we have learned today is, I am going to revise in next 5 minutes. So we started that with the trade-off between inflation and unemployment. In the last lecture we learned about unemployment. In today's lecture we have tried to relate the concept of inflation and unemployment, and we said that there is a trade-off that exists between inflation and unemployment rate in the short run, and in the long run, and we have a vertical, or there is no trade-off, or these two parameters are unrelated. And we have explained this concept of trade-off between inflation and unemployment rate with the help of Phillips curve. Phillips has given us a curve which is the negatively sloped curve that explains the relationship between inflation rate and unemployment rate, and according to that curve, it is clear that whenever there is an increase in the inflation rate in the economy, this will lead to decrease in unemployment rate in the economy, and vice versa. We can say that inflation and unemployment rate are negatively related with each other. Now this is what we have learned in the first part of today's lecture, and then we moved that if the policy maker expand aggregate demand, so they can lower unemployment rate, but only at the cost of high inflation rate. तो हमने ये कहा, हमने ये सीखा, अगर पॉलिसी मेकर, अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि एग्रीगेट डिमांड मुल्क में बढ़ जाए, राइट, सो how they can do that? Only by adopting expansionary monetary policy. जब expansionary policy adopt करते हैं तो क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट तो मुल्क में कम हो जाएगी, बिकॉज एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से आउटपुट एक्सपेंड कर जाएगी. जब आउटपुट एक्सपेंड करती है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है, बट दिस कुड बी ओनली पॉसिबल एट ए हाई इन्फ्लेशन रेट, क्योंकि जब मनी सप्लाई बढ़ेगी इकोनॉमी में, ग्रोथ रेट ऑफ मनी सप्लाई बढ़ेगी, ग्रोथ रेट ऑफ मनी बढ़ेगी, तो प्राइसेस बढ़ जाएंगी. नाउ and vice versa, if they contract aggregate demand, they can lower inflation but only at the cost of high unemployment rate. तो हमने ये देखा कि अगर गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है, whether they want to expand aggregate demand, if they want to expand aggregate demand, they can do that. They can raise the output level in the economy and reduce unemployment in the economy only at the cost of high inflation. And if they contract aggregate demand, they can lower inflation, inflation but at higher unemployment rate. Now the Phillips curve illustrate this relationship between inflation and unemployment. तो जो Phillips curve है, जो downward sloping हमने curve देखा, वो इस phenomena को एक्सप्लेन करता है. वो ये कहता है कि शॉर्ट रन में ये अनएम्प्लॉयमेंट में और इन्फ्लेशन में हमेशा ट्रेड ऑफ रहता है. अगर पॉलिसी मेकर इस ट्रेड ऑफ को इफेक्ट करना चाहते हैं बाय अडॉप्टिंग एक्सपेंशनरी पॉलिसी और कंट्रक्शनरी पॉलिसी टू रेज और इंक्रीज द एग्रीगेट डिमांड और रिड्यूस द एग्रीगेट डिमांड, तो वो कर सकते हैं, बट दे हैव टू बेयर सम कॉस्ट, right? So we have seen that by adopting expansionary policy, वो aggregate demand को बढ़ाते हैं, inflation बढ़ता है, output बढ़ती है, लेकिन unemployment बढ़ जाती है at a cost of high unemployment, which is temporary unemployment. But Phillips curve, but if they contract aggregate demand with by contractionary policy, तो उससे इन्फ्लेशन तो कम हो जाएगा, बट हाई अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी. सो देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेड ऑफ, एंड फिलिप्स कर्व एक्सप्लेन दिस रिलेशनशिप. The greater aggregate demand for goods and services, the greater is the economy output and the higher is the overall price level in the economy. So when we say that there is a greater aggregate demand of goods and services in the economy, the greater will be the economy output and the prices will be higher. A higher level of output results in lower level of unemployment. तो हमने ये देखा, whenever there is increase in aggregate supply in the economy, so aggregate demand in the economy, so this increase the overall output in the economy और unemployment कम हो जाएगी, लेकिन prices
बढ़ जाएंगी। उसके बाद हमने सप्लाई शॉक की बात की। वी हैव लर्नड अबाउट द सप्लाई शॉक। सो वी सेड दैट whenever there is adverse supply shock, तो हमने ये सीखा adverse supply shock से this gave less favorable trade off between inflation and unemployment। हमने ये देखा कि जब adverse supply shock होता है इकोनॉमी में तो उससे पॉलिसी मेकर को एक less favorable trade off मिलता है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के दरमियान, और हमने ये देखा कि adverse supply shock से इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है और अनएम्प्लॉयमेंट भी इकोनॉमी बढ़ जाती है। तो दैट इज लेस फेवरेबल फॉर द पॉलिसी मेकर। Now the view that unemployment eventually returns to its natural rate regardless of the rate of inflation is called natural rate hypothesis। तो हमने ये देखा कि ये पॉसिबिलिटीज शॉर्ट रन में तो हो सकती हैं, ट्रेड ऑफ एग्जिस्ट करता है कि अगर एक को बढ़ाते हैं, इन्फ्लेशन को बढ़ाते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है, इन्फ्लेशन को कम करते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। लेकिन लॉन्ग रन की जब हम बात करते हैं तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेल्स in the economy always, and this is known as the natural rate hypothesis। अब आपने लास्ट पे हमने जो बात की, हमने ये कहा कि अगर गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कम करना चाहती है, if the government want to reduce inflation, how they can do that? They can do this by adopting contractionary monetary policy। Now जब गवर्नमेंट कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करती है तो क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड कम होगी। जब एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो प्राइसेस कम होती हैं, और जब प्राइसेस कम होती हैं तो प्रोडक्शन कम होती है। जब प्रोडक्शन कम होगी तो सप्लाई कम होगी और नेचुरली अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। सो गवर्नमेंट कैन रिड्यूस इन्फ्लेशन बट एट द कास्ट ऑफ हाई इन्फ्लेशन रेट। सिमिलरली हमने ये भी देखा कि अगर गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना चाहती है तो उस सूरत हाल में गवर्नमेंट हैज टू बेयर हाई इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। सो देयर इज अ कास्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट ऑन ईच अदर। तो दैट इज बिकॉज ऑफ द ट्रेड ऑफ दैट एग्जिस्ट बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि हमें फिलिप्स कर्व ने दी है। तो स्टूडेंट्स आज हमने सीखा, हमने ये कहा कि देयर इज a trade-off that exists between inflation and unemployment short run में, लेकिन long run में हमने ये देखा कि whatever is the inflation rate, तो there is a natural rate of unemployment which prevails in the economy। तो हमने unemployment का और inflation का आपस में relationship के बारे में आज बात की। तो यहाँ पे आज के लेक्चर को ख़त्म करते हैं। With these words I finish my lecture here। Till the next time, till the next lecture, Allah Hafiz and God bless you.